Hello students, as you know that in the last part of the video we have started chapter number 12 of class 11th maths, introduction to three-dimensional geometry. Okay, so in the last part student I told you what is three-dimensional space, okay, and what are the coordinate axis and coordinate plane in three-dimensional space. Okay, I told you in 3D space there will be three axes that such as x-axis, y-axis and z-axis, and there will be three plane also, that is xy, yz and zx plane. Okay, and these all three planes are mutually perpendicular to each other. Okay, next thing I told you that in 3D space three mutually perpendicular plane divide the whole space in 8 parts, and that parts are known as octants. Okay, so there will be 8 octants in a space, and any point which is in the space can lie in any of these octants. Okay, so and the sign of the point will depend upon the location of its octant. Okay, means whenever the point will lie, it will be represented by its octant. Either it will lie on first octant or second octant or third, fourth and so on. Okay, so that much thing I told you, and I also told you the sign conventions of a point in different octants. Okay, so today we will start from one topic, that is coordinates of a point in a plane, in a space. Okay, coordinates of a point, coordinates of a point in a space. Okay, suppose student you have a point, any point, suppose a point P is lying in a space. Okay, so if there is a space, there will be three axes, that is x-axis, y-axis and z-axis. Okay, and if any points will lie in a space, it will have its three coordinates such as x coordinate, y coordinate and z coordinate, because in 3D geometry we study one more coordinate, that is known as z-axis. Okay, z-axis. So now see, suppose I am having a 3D space, okay, along with axis, that is x, y and z. Okay, z, and suppose a point is lying in the space, a point is lying in the space. Suppose I'm teaching you in a room now, so I'm occupying some point of this room, so I will lie in a space. So suppose I'm having a point P, okay, P, and this P is lying in the air. ठीक है, दिस P इज लाइंग इन द एयर, ये एयर में है. ठीक है, ये किसी प्लेन में नहीं है, ये किसी एयर में है, और उस एयर को ही क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स. ओके, उस एयर को ही क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट्स. तो सपोज दिस पॉइंट P इज लाइंग इन अ एयर. ठीक है, अगर एयर में है तो इट मींस दैट इट इज लाइंग इन अ स्पेस. ठीक है, सो आई हैव टू फाइंड आउट इट्स कोऑर्डिनेट. ओके, आई हैव टू फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट. सो व्हाट आई विल डू, फ्रॉम P आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. ठीक है, from P I will draw a perpendicular in xy plane. ठीक है, now see, I am repeating again. Suppose there are three mutually perpendicular axes, x-axis, y-axis and z-axis, and a point P is lying in the air. Lying in the air means it is in the space, and if P is lying in the air, it means it will lie in any of the 8 octants. मतलब कि 8 octants में से वो कहीं भी होगा. ठीक है, हमको पता नहीं है, बस ये पता है कि it is lying in the air. Okay, so I have to find out its coordinate. So what I will do, from P I will draw a perpendicular. From P I will draw a perpendicular to xy plane. To which plane? Xy plane. And in the last part I told you this plane is known as xy. This is xy plane, this is yz plane, and this is zx plane. ठीक है, so this much thing I told you in the previous class. So from P I will draw a perpendicular in xy plane. So the perpendicular will be like this. ठीक है, suppose I have drawn a perpendicular from P to xy plane, and suppose this will be PM. ठीक है, and this PM will be perpendicular to xy plane, means
this PM will be perpendicular to XY plane. ठीक है, एंड आई टोल्ड यू दैट दिस पॉइंट इज लाइंग इन द एयर, किसी प्लेन में नहीं है, वो एयर में है. ठीक है, ये वाला पॉइंट किसी प्लेन में नहीं है, एयर में. और अगर एयर में है इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी ना किसी ऑक्टेंट्स में होगा. ठीक है, तो फ्रॉम P आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर ऑन XY प्लेन. दिस पॉइंट इज नोन एज स्टूडेंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर. नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ दिस पॉइंट इन लाइंग इन XY प्लेन. सो सपोज XY प्लेन इस टाइप ऑफ क्वाड्रेंट, जैसे XY प्लेन हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये बिल्कुल वैसा ही है ये पॉइंट. ठीक है, तो फ्रॉम P व्हाट यू डू स्टूडेंट, यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू from P. Now from P what you do, you draw a perpendicular line to x axis. So suppose this is a perpendicular line to x axis like this. ठीक है, ठीक है, this is the perpendicular line from P to x axis and suppose this point is L. ठीक है, suppose this point is L. Now see student, when I have drawn a perpendicular from P to L, from P to L, I can say this distance will be R small x. This distance R small x. And see, this LM is, if LM is parallel to x axis, it means that LM will be parallel. If LM is perpendicular to x axis, it means that LM will be parallel to y axis. Is it clear? Is it clear, student? Now what I have done, from P I have drawn a perpendicular in XY plane, that is M, and from M I have drawn a perpendicular to x axis. ठीक है, so now see, on x axis suppose this point is L, so if it is origin, so this OL will be Rx because it is along x axis. And now if LM is perpendicular to x axis, it means that LM will be parallel to y axis. ठीक है, and that much distance will be in the direction of y axis, so it means that this will be Ry. ठीक है, because this is parallel to y axis ना, if this is perpendicular to x axis, so it means that LM will be parallel to y axis, so it means that this distance will be y, so it means that this point P is covering y distance along y distance along y axis and x distance along x axis. Now one more thing is there, I said na कि this point is lying in the air, so it means that this point will be at some height from this plane. This point will be at some height from this plane, so it means that this distance is parallel to which axis, student? This distance, that is PM, will be parallel to z axis, and along z it will cover z distance. So the coordinate of the point will be x, y, z. ठीक है, so by that way we can identify the location of a point in a space. This is the point P which is in the air. ठीक है, which is in the air, not in the plane. It is in the air, so it means that it is lying in the space. So if it is lying in the space, it means that it should have three coordinates such as x, y, and z. So what I have done, from P I have drawn a perpendicular to XY plane. So suppose this point is M, this point is known as foot of perpendicular, and from M I have drawn a perpendicular to x axis. So if I will draw a perpendicular to x axis, so OL will be the distance, will be x, and because LM is parallel to x axis, so it means that LM is perpendicular to x axis, it means that LM will be parallel to y axis. So that much distance it is covering along y axis, so this will be y, and because this point is at some height from the piece of paper, so that distance will be z, which is along z axis. ठीक है, so it means that the coordinate of point P will be x, y, z. ठीक है, by this way you can identify the location of any point. अब now this point P can lie in any of the 8 octants ना, तो उसका साइन चेंज हो सकता है अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से. मैंने इसको मान लिया था फर्स्ट ऑक्टेंट में माना था इसको.
मैंने इस पॉइंट P को फर्स्ट ऑक्टेंट में माना था, दैट्स व्हाई हियर ऑल एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट ऑक्टेंट में लाई करेगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। तो करना क्या है स्टूडेंट, कोई भी पॉइंट हो आपके पास, आपको बस ये फिगर याद रखना है। आपको ये फिगर याद होगा तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट, सपोज मैं यहां पर हूं ना, मैं यहां पे हूं, मैं अगर यहां पे हूं, सपोज आई एम लाइंग, माई हैंड इज हेयर इन द स्पेस, ठीक है। आई सेड टू यू दिस इज आर एक्स एक्सिस, दिस इज आर वाई एक्सिस, ठीक है। तो सपोज इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, पहले एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और उस परपेंडिकुलर से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो वो हमारा एक्स की डिस्टेंस बता देगा। और अगर मैं एक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो वो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, इट मींस इट विल कवर सम डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, सो दैट विल बी आवर वाई, एंड बिकॉज दिस पॉइंट इज एट सम हाइट फ्रॉम द बेस, so it will be our z, and because it is at upside, that's why z is positive, that's why the coordinate of P is x, y, z, ठीक है। So from here I can write some result। P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन में, and M is the foot of perpendicular, and ML is perpendicular to x axis। If ML is perpendicular to x axis, it means that ML will be parallel to y axis, ठीक है। So it means that our OX will be x, LM will be y, and PM will be z. So the coordinates of P will be x, y, z, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कोई पॉइंट अगर एयर में है तो एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जहां पे भी परपेंडिकुलर आएगा वहां से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, दैट विल बी आवर एक्स, एंड बिकॉज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सो इट मींस दैट दिस लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो इट मींस दैट दिस पॉइंट इज कवरिंग वाई डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, एंड बिकॉज दिस पॉइंट इज एट सम हाइट फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन, सो इट विल बी आवर जेड, सो द कोऑर्डिनेट विल बी एक्स, वाई, जेड, ठीक है। One more method is there, but I think you should focus on this only, ठीक है, because it is much easier than the other method, ठीक है। Now, from this figure we can derive few results, okay. From this figure we can derive few results. What? See, the coordinates of origin will be, students, the coordinates of origin in 3D space, the coordinates of origin, because we are studying 3D space, students, we are studying 3D space, so it means that any point will have the coordinate x, y, z, so it means that the coordinates of origin will be 0, 0, 0, ठीक है, 0, 0, 0, ठीक है। One more thing, if any point, जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था कि कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे भी होता था, वाई एक्सिस पे भी होता था, तो वहां पे एक्स पे है तो वाई जीरो, वाई पे है तो एक्स जीरो। ऐसे ही अगर वहां पे क्या होता था, एक्सिस डिवाइड करती थी प्लेन को, यहां पर प्लेन डिवाइड कर रहे हैं स्पेस को, ठीक है। इतना याद रखना है, यहाँ पे प्लेन डिवाइड कर रहे हैं स्पेस को, और कितने प्लेन थे हमारे पास, 3 प्लेन्स, दैट वर एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, एंड ऑल दीज प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सपोज अ पॉइंट इज लाइंग इन any of the one plane, suppose a point is lying in, wait a minute, suppose if a point is lying in xy plane, suppose a point is lying in xy plane, for example here point M, ठीक है, M is lying in the xy plane, so what will be its coordinate, student, what will be its coordinate, it will have some x, it will have some y, but because this point is not covering any distance along z axis means either upside or downside, ठीक है। so this M, जैसे कि I am having a piece of paper like this and a point is lying on this paper only, ठीक है, a point is lying on this paper only, so this paper consists x axis as well as y axis, and we know that z axis is either upwards or downwards like this,
So if a point is lying in the xy plane, so it means that it should have some x coordinate, it should have some y coordinate, but it will not having any z coordinate because it is not covering any distance along with either positive direction of z axis or negative direction of z axis. So if any point is lying in the xy plane, its coordinate will be x comma y comma 0. ठीक है. If any point is lying in xy plane, इसका मतलब x भी होगा, y भी होगा, z नहीं होगा. ठीक है. Similarly student, if a point is lying in yz plane, yz plane is what? Yz plane is up, height and this. So if a point is lying in this plane, so it means that it will not cover any distance along x axis. So it means that its coordinates will be 0, y, z. ठीक है. अगर कोई पॉइंट xy प्लेन में है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, 0. अगर कोई पॉइंट yz प्लेन में है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y, z. एंड इफ अ पॉइंट इज लाइंग इन xz प्लेन, so it means that it will not have its y coordinate. ठीक है. तो इसके बाद आप लिख लेना कि if a point is lying in zx plane या xz plane, its coordinate will be x, 0, z. ठीक है. मैं लिख देता हूं यहां पे. It is the first point, it is the second point, and it is the third point. कि if a point is lying in xz plane, its coordinate will be x, 0, z. ठीक है. लाइक दिस. और अगर कोई पॉइंट किसी ऑक्टेंट में है तो उसमें तीनों होंगे, x भी होंगे, y भी होंगे, z भी होंगे. जैसे कोऑर्डिनेट था ना कि कोई पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट में होता था तो x भी होता था, y भी होता था. वैसे ही अगर कोई पॉइंट अगर किसी ऑक्टेंट में है तो उसमें x, y, z तीनों होंगे. और अगर प्लेन में होंगे तो उसमें से कोई ना कोई एक जीरो होगा. अगर एक्स वाई प्लेन में है तो z जीरो होगा, अगर yz प्लेन में है तो x जीरो होगा, और अगर xz प्लेन में है तो y जीरो होगा. ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू कैन रिमेंबर. ओके. So after this student we will solve few questions. Now one more thing. ये तो हमने प्लेन की बात कर ली. ओके. ये हमने प्लेन की बात की स्टूडेंट्स. Now if a point is lying in x axis as well as y axis as well as z axis, ये तो प्लेन में लाई कर रहा था ना. अगर कोई पॉइंट प्लेन में है तब क्या होगा. ठीक है. अगर कोई पॉइंट प्लेन में है तो क्या होगा. वैसे ही अगर कोई पॉइंट एक्सिस में है तब उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे. तो आवर हेडिंग विल बी इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन एनी वन ऑफ थ्री एक्सिस. ठीक है. इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन एनी वन ऑफ थ्री एक्सिस, तो सपोज इन फर्स्ट केस, if a point is lying on x-axis, if a point is lying on x-axis, if a point is lying on x-axis, याद देना यहां प्लेन लिखा है मैंने और यहां एक्सिस लिखा है. ठीक है. if a point is lying on x-axis, its coordinate will be x, 0, 0. ठीक है. एक्स एक्सिस पर केवल x होगा, y एक्सिस पर केवल y होगा, z एक्सिस पर केवल z होगा. इसके अलावा बाकी सारे कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे. तो इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस, इट्स कोऑर्डिनेट विल बी x, 0, 0. सेकंड
if a point is lying on y-axis, its coordinate will be 0, y, 0. And third part, that if a point is lying on z-axis, its coordinates will be 0, 0, z. ठीक है. So like this, you have to remember the point which is lying in plane also, as well as axis also, as well as octant also. आपको तीनों केस में याद रखना है. अगर octant में होगा तो उसमें x, y, z तीनों होंगे. अगर प्लेन में होगा तो कोई दो होगा, एक नहीं होगा. और अगर एक्सिस पे होंगे तो कोई एक होगा, दो नहीं होगा. ठीक है. तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट 3D स्पेस, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस, एंड व्हाट इज x, y and z, how many types of planes are there, how many types of axes are there, and so on. ठीक है. And with the help of this concept, student, you can easily solve the exercise 12.1. okay. So first you note down these things. After that I will discuss exercise 12.1. ठीक है. So please note down it. Now students, let's discuss about exercise 12.1. And the first question of exercise 12.1 is that a point is on the x-axis. Okay, what are its y coordinate and z coordinate? Okay, a point is lying on x-axis. Okay, now point is on which axis, student? Point is on x-axis. Okay, so if a point is lying on x-axis, so its coordinate should be like this: x, 0, 0. Okay, just now I told you about this concept. If a point is lying on x-axis, its coordinate should be x, 0, 0. So question is asking what are its y coordinate and z coordinate. So its y coordinate will be 0 and z coordinate will also 0, because on x-axis there will be only x. Okay, so the answer of first question is this. Okay, second question, a point is in the xz plane. Okay, what can you say about its y coordinate? Again same question. Okay, a point is xz plane. So what should be its coordinate, student? Its coordinate should be x, y, z. So x will be x, y will be 0, and z will also be z. So question is asking what can you say about its y coordinate? So its y coordinate will be equal to 0, because in xz plane only x and z will be there. Okay. Now third question, name the octants in which the following point lie. Okay, I told you 8 octants, my student. I told you 8 octants. Okay, first, second, third, fourth. Okay, and after that fifth, sixth, seventh, and eighth. There are 8 octants, and if a point is lying in any of the 8 octants, so it should have some sign. So in first, x, y, z all are positive. Okay. In second, x negative, y positive, z be positive. Okay. In third, x negative, y be negative, z positive, and fourth, x positive, y negative, z positive. Okay. Now in fifth, x positive, y positive, z negative. In sixth, x negative, y positive, z negative. In seventh, x, y, z all are negative, and in eighth, x positive, y negative, z be negative. Okay. So this is the sign convention of the all 8 octants. So first point,
So first point is our 1, 2, 3. In which quadrant, in which octant it will lie? So it will lie in first octant. Okay. Second, 4, minus 2, 3. 4, minus 2, minus 3. So plus minus plus is the sign of fourth octant. So it will be in fourth octant. Okay. Similarly, 4, minus 2, minus 5. Plus minus minus, it is the sign of 8th quadrant, 8th octant. So it will be in 8th octant. Actually हम लोग की हैबिट है क्वाड्रेंट बोलने की, लेकिन यहाँ ऑक्टेंट बोलेंगे. ठीक है. 4 था तो क्वाड्रेंट, 8 है तो ऑक्टेंट. ठीक है. Similarly, you can tell the name of the octants in which the points are lying. Many points are given in the question. So I have told you 3. Remaining you can solve by yourself. ठीक है. Now part 4. Fill in the blanks. The x-axis and y-axis taken together determine a plane known as. जब हम लोग x-axis और y-axis को साथ में देते हैं तो कौन सा प्लेन बनता है? xy plane. Okay. The coordinates of point in a plane xy are of the form. If a point is lying in a xy plane, so what will be its coordinate? Its coordinate will be x, y, 0. ठीक है. And the third is coordinate planes divide the space into coordinate planes. Okay, there are 3 coordinate planes such as xy, yz and zx. I told you these coordinate planes divide the space into 8 parts, okay, which are known as octants. So by this, student, you can easily solve exercise 12.1. Okay, so I hope whatever things I told you that is clear to you about 3D. In the next class we will discuss about the distance between 2 points in a space. Okay, so till then, students, I hope you are solving all the questions, so please solve. So in next class we will study about distance formula. Okay, so till then, students, have a nice day. Take care. Thank you.